Assalamu alaikum dear students of class 2. How are you? I hope you all are all right. Welcome to your English class. Open your ORC book page number 36. Today we are going to read story 6. Story 6, Chicken Licken. So let's read the story. Chicken Licken clucked a jolly tune. She was on her way to the woods. Suddenly there was a whistling sound and splat! A huge corn fell on her head. Chicken Licken rubbed her head with one wing. Dear me, she said, the sky must be coming down. I must tell the king immediately. She turned herself around and raced back. Then she met Henny Penny. Well, hello, Henny Penny, said Chicken Licken. Where are you going? I'm off to the wood to get some worms, said Henny Penny. Dear students, it's Chicken Licken and it's Henny Penny. Chicken Licken is a little chicken and it's a big hen. डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, ये छोटा सा चिकन है, मुर्गी का बच्चा है छोटा सा, और ये बड़ी मुर्गी है। ये उसे मिल रहा है कि आप, और पूछ रहा है कि आप कहाँ जा रही हो। वो कह रहा है, वो हैन कहती है कि मैं तो दाना चुगने जा रही हूँ। फिर ये कहता है कि मेरे ऊपर एक ज़ोरदार आवाज़ गिरी है। तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि आसमान नीचे गिरने वाला है। चलो हम किंग को बताते हैं। Then the Chicken Licken says, oh, please don't go there, Henny Penny, said she. The sky is falling down. I fell the first bit. It hit on my head. I'm going to tell the king. So Henny Penny turned back with Chicken Licken. They raced along and soon met Cocky Locky. Cocky Locky is a male chicken, a rooster. Don't tell us you are going to the wood. और कॉकी लॉकी को कहते हैं कि शायद आप भी बाहर। So they are telling to the rooster and saying, don't go to the wood, the sky is falling down. Oh my God, why Chicken Licken is feeling the sky is falling down? Something hit on her head and the Chicken Licken is feeling the sky is falling down, and the Cocky Locky is coming with them. Don't tell us you are going to the wood, cried Chicken Licken and Henny Penny. All right, replied Cocky Locky. I won't tell you that. Where are you going then? Asked Chicken Licken. I'm going to the wood, said he, laughing. Oh no, cried Henny Penny. फिर उसने रूस्टर ने कहा, हा 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 हा, मैं तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम दोनों कहाँ जा रही हो? फिर उसने कहा कि हम दोनों तो किंग के पास जा रहे हैं। फिर रूस्टर ने कहा, हा 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 हा, मैं तो जंगल की तरफ जा रहा हूँ। फिर हैनी पेनी उसे कहती, oh no, don't go. I was on my way. There I met Chicken Licken. She told me that a piece of the sky hit her on head. Yes, it did, said Chicken Licken, still rubbing, and we are going to tell the king. So Cocky Locky turned back to the three of them raced along until they met Ducky Lucky. Hello, Ducky Lucky, where are you going? They asked. I'm going to the wood. Then Cocky Locky said, oh, Ducky Lucky, don't go, for I was going and I met Henny Penny and I met Henny Penny and Henny Penny met Chicken Licken and the sky had falling onto her head, and they are going to tell the king. And we are going to tell the king. So Ducky Lucky turned back and they met Draky Lucky. Well, Draky Lucky, where are you going? And Draky Lucky said, I'm going to the wood. The Ducky Lucky said, oh, Draky Lucky, don't go, for I was going. I met a Cocky Locky. So dear student, Ducky Lucky means duck. Okay, Draky Lucky means it's like a chicken or it's another bird.
And the Cocky Loki means a male chicken. For I was going and I met Cocky Loki, and Cocky Loki met Henny Penny. Chicken Licken had been at the wood and going to tell, and the sky had fallen onto her head, and we are going to tell the king. So Dracky Lakey turned back and they met Goosey Loosey. Goosey Loosey means a goose. Well, Goosey Loosey, where are you going? And Goosey Loosey said, I am going to the wood. Then Dracky Lakey said, Oh, Goosey Loosey, don't go, for I was going and I met Ducky Lucky and Cocky Loki and Henny Penny and Chicken Licken. And Chicken Licken had been at the wood and the sky had fallen onto her head, and we are going to tell the king. So Goosey Loosey turned back and they met General Lander. Well, General Lander, where are you going? General Lander said, I am going to the wood. So, dear students, we read that these all birds are sad and very amazed that sky is falling on them, and they are going to tell the king that sky is falling on them. डियर स्टूडेंट्स, ये सारे बर्ड्स हैं और ये जो जंगल का बादशाह है, किंग है, उसको बताने जा रहे हैं कि कोई आफत आने वाली है, कोई आसमान जो है वो गिरने वाला है. ये सारे बहुत परेशान हैं और किंग के पास जा रहे हैं. And open book page number 40. It was book page number 39, and we will read the book page number 40. And then Goosey Loosey said, Oh, General Land, don't go, for I was going and I met all this lot. And to cut a long story short, the sky is falling and we are going to tell the king. So General Land turned back and met Turkey Lucky. Turkey Lucky, well, Turkey Lucky, where are you going? Turkey Lucky said, I am going off to the wood. Then General Land said, Oh, Turkey Lucky, don't go, for I was going and I met. Oh, never mind, Chicken Licken says the sky is falling, we are going to tell the king. टर्की लकी को मतलब ये अब सारी बात तो नहीं बता सकते थे, बहुत बड़ी होगी, तो उन्होंने मुख्तसर करके बता रहे हैं कि स्काई इज़ फॉलिंग, आसमान गिरने वाला है, और हम किंग को बताने जा रहे हैं. सो टर्की लकी टर्न बैक एंड वॉक्ड विद जनरल लैंडर, Goosey Loosey, Dracky Lucky, Ducky Lucky, Cocky Loki, Henny Penny, and Chicken Licken. As they were going along, they met Foxy Loxy. Foxy Loxy and Foxy Loxy said, Where are you lot going in such a hurry? In such a hurry? And they told him. Foxy Loxy said, I don't mean to be rude. यहाँ पे फॉक्सी लॉक्सी ने उनसे पूछा है कि आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं. तो उन्होंने सारी बात फॉक्सी लॉक्सी को बताई कि स्काई इज़ फॉलिंग ऑन देम, आसमान जो है गिरने वाला है. अब फॉक्सी लॉक्सी चले ने क्या देखती है. ओपन पेज नंबर 41. That is not the way, my dear. You are not near, I fear. Come along with me. I know a shortcut. So Chicken Licken, Henny Penny, Cocky Loki, Ducky Lucky, Dracky Lucky, Goosey Loosey, and Turkey Lucky followed the Foxy Loxy deeper into the forest. Foxy Loxy was just getting ready to gobble up the feathery friends when suddenly a tiny acorn dropped from the tree and hit Foxy Loxy on the head. Boom, bonk. Luckily, Foxy Loxy didn't see the corn. He looked up at the clear blue sky. Oh no, he said, the sky is falling. I must tell the king. Foxy Loxy ran off and was never seen again. Everyone looked at Chicken Licken. Are you sure the sky fell on your head? They said, Well, maybe it was an acorn, said Chicken Licken, and they chased him all the way home to the farmyard. तो जैसे ही ये सारे बर्ड फॉक्सी लॉक्सी से मिले तो फॉक्सी लॉक्सी ने सोचा कि चलो मैं इन सबको खा जाती हूँ. फॉक्सी लॉक्सी ने उनसे कहा कि ये आप गलत रास्ते जा रहे हैं, किंग वहाँ नहीं है, चलो मैं आपको लेके चलती हूँ.
तो वो उन्हें एक रास्ते में लेके गई, जंगल में लेके गई। तो जैसे ही उसने उसको उनको खाने का सोचा, फॉक्स ने कहा कि मैं सारों को खा जाऊंगी। जैसे ही वो उनको खाने के लिए आगे बढ़ा तो उसके ऊपर भी एक कॉर्न जो है वो उसके सर पे लगा, और उसने जैसे ऊपर देखा तो आसमान में तो कुछ भी नहीं था, कॉर्न तो नीचे गिर गया। तो फॉक्सी लॉक्सी को भी ये लगा कि शायद आसमान गिरने वाला है, और वहाँ से वो भाग गया, फिर वो कभी नहीं दिखा। फिर सारे बर्ड्स ने फॉक्सी लॉक्सी को देखा, यार इसके ऊपर तो ये कौन गिरा था, और हम चिकन लिकन ने हमने इसकी बात पे यकीन कर लिया। चिकन लिकन को कहा कि क्या सच में आसमान गिरने वाला है। चिकन लिकन ने कहा कि हाँ शायद, मैंने तो नहीं देखा। तो वो सारे चिकन लिकन के पीछे भाग पड़े, और वो उसके पीछे भागते रहे। So, dear students, we read the story. It was very funny. And your homework is read the story and write the names of the animals and birds that are mentioned in the story. और आपका होमवर्क ये है कि आपने जो भी बर्ड्स हैं उसमें उसके जो भी नाम से बर्ड्स के और एनिमल्स के, वो आपको एक लिस्ट बनानी है और वो आपको लिखने हैं और आपको तस्वीर भेजनी है ग्रुप में। ठीक है, अच्छे से रीडिंग करिए और बर्ड्स और एनिमल के नाम लिखिए। ठीक है, आपको जो एनिमल्स हैं, जो भी बर्ड्स हैं, उसके मेंशन है स्टोरी में, आपको उसके नाम लिखने हैं और स्टोरी की रीडिंग करनी है अच्छे से। सो डू योर होमवर्क केयरफुली। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।